I know lights can be expensive sometimes and not everyone can afford it, इसलिए हमें हर बार नेचुरल लाइट में ही शूट करना पड़ता है। पर नेचुरल लाइट में शूट करने के बाद भी हमारी इमेज कुछ प्रोफेशनल लेवल नहीं दिखती। बट डोंट वरी, 4 साल में 100 से भी ज़्यादा वीडियो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लाइट में शूट करने के बाद आई हैव लर्न न्यूमरस टेक्निक्स व्हिच हेल्प मी टू गेट दिस प्रोफेशनल लेवल रिजल्ट्स। इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ टू कंट्रोल एंड शेप नेचुरल लाइट, एंड बाय डूइंग दैट आई विल आल्सो शो यू हाउ आई क्रिएटेड दिस 3 लुक without using any lights. Third one is my favorite, तो उसे मत मिस करना। तर मग मित्रांनो, करायचं का चालू? नेचुरल लाइट यानी सनलाइट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव लाइट, जिसे ना हम हमारे मर्जी के हिसाब से चालू या बंद कर सकते हैं और ना ही उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंट्रोल द अवेलेबल लाइट एंड शेप इट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. There are 3 ways to control light. Number 1 is negative fill. Negative fill is used to reduce or block light. इससे आप अपने इमेज में कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो by reducing light and adding shadows to your subject. ये बेसिकली एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है and as you know black absorbs light. इसका इस्तेमाल लाइट को शेप करने में भी यूज़ किया जाता है. You can use any kind of black material as a negative fill. तो चाहे वो ब्लैक पेपर हो या फिर ब्लैक वॉल, इट डजेंट रियली मैटर, सिर्फ वो ब्लैक कलर का होना चाहिए. नंबर 2 इज़ बाउंस लाइट. जैसे हम नेगेटिव फील्ड को लाइट को रिड्यूस करने में यूज़ करते हैं, वैसे ही वी यूज़ बाउंस टू ऐड लाइट. You can bounce light by using any kind of white material like white board or white side of an reflector. You can also bounce different quality of light by using different type of bounce material. If you want a cool tone, then you can use a silver side of a reflector. If you want a warm tone और आप sunlight को mimic करना चाहते हो, then you can use the golden side of the reflector. Number 3, diffusion. Diffusion is a thin material used to diffuse the harsh light, which gives us a soft look. You can use any kind of material that can diffuse light, like white bedsheet or simply window curtains. You see, the whole game of cinematography and lighting techniques is dependent on these 3 tools. अगर इन 3 टूल का प्रॉपर यूज करना सीख गए, then you can create a best looking image whether you have lights or don't. और ऐसे बाकी और भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट मुझे मेरे हिस्ट्री टीचर जैसा नहीं बनना है जिसके क्लास में बच्चे लोग सो रहे होते हैं. That is why without boring you guys, let's just use these techniques and see how we can create the best looking image. This is our first look. हमारे किचन की खिड़की से शाम के वक्त एकदम मस्त पे की लाइट आती है. Our window and the kitchen counter is acting as a negative fill, which is cutting our natural light and shaping it in such a way, leaving us with a small portion of a light lake which is creating this beautiful light pattern. Now let's keep our subject in the frame. I am using the harsh light as a key light, which is our sun. Now the light is pretty harsh on my face, which is not the look I am going for. Now let's just try to diffuse this light by using our diffusion sheet. अब ये करने के बाद हमारी लाइट तो सॉफ्ट हो गई है, बट ये हर जगह पे स्प्रेड हो रही है, विच इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग आवर पैटर्न. बट हमें तो ये लुक नहीं चाहिए था. वी जस्ट वॉन्ट टू डिफ्यूज द हार्शर पार्ट ऑफ द इमेज. सो वट डिड वी डू रॉन्ग? Was the diffusion material was wrong or the size of the diffusion sheet? The correct answer is neither of them. The reason why the light is more spreaded because of the position of the diffusion. Let me explain why. To create any kind of shape or pattern with a light, you should always place the cutter or any kind of shaping material, which should be black by the way, in between the main light source and the subject to create shape. और अगर आपने कटिंग मटेरियल लाइट सोर्स और सब्जेक्ट के बीच में ना रख के किसी और जगह पर रख दिया, then it will not work. In our case, the sun was the main light source and the window was acting as a cutter. And then we brought in the diffuser in between the cutter and the subject, hence destroying our shape and creating a new light source. So to fix that, we have to place the diffuser outside the window to soften the harsh light. In my case, there was no place to keep a reflector outside the window. तो मैंने क्या किया? I used the window glass as a diffusion sheet, which gives us a softer light while maintaining the shape of light. And here is the final look. देखो अब ये चीज़ ना मैं एकदम सिंपल में बता सकता था कि भाई मैंने तो खिड़की बंद कर दी और खिड़की में से सॉफ्ट लाइट आ रही थी बिकॉज ऑफ द ग्लास, और आपको भी वही करना चाहिए एंड हियर इज द रिजल्ट.
But I don't want to do that because I want you to understand कि हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है. Especially in filmmaking and lighting, हर एक छोटी से चीज़ can make a big difference. That is why मैं चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ अंधाधुंधी से ना करें. Nevertheless, let's move on with the second look. This is our second look. Again, I'm using window light as our main key light, which is hitting me on the side and giving me the edge light, hence separating me from the background. Now in this case, our face is little bit more on a shadow side. We need more light on face to lift some shadows. I've used the book which was already in my hand to reflect some extra bit of light on my face. यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्टर को यूज़ नहीं किया है. The reason being the size of the reflector. अगर यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्टर को यूज़ किया होता then it would give me a very flat image by removing all the shadows because of the size of the reflector. इसलिए मैंने यहाँ पर बुक का इस्तेमाल किया which was giving me good enough light to lift the shadows while wrapping the light on my face while keeping the shadows which is giving us a good contrast to our image. A lot of beginners don't understand this. Shadows are as much as important as light. अगर आप एक image में से shadows हटा दो then that image will simply look flat and it will definitely not look cinematic. To be honest, I really don't want to use the word cinematic, but क्या करें, आजकल लोगों को यही भाषा समझती है, so करना पड़ता है. Nevertheless, now let's recall what we learned so far. In our first example, we learned how to diffuse light and how to shape light. In our second example, we learned how to bounce light. Now let's just use all of this technique together in our next example and see what we can create. This one is my favorite. Let's do it. The technique that I'm going to use to light the shot is called backlit technique. The light coming from the window is directly hitting on the right side of our subject, जिससे हमारे subject को एक edge light मिल रही है. But because of that, our other side of the face is full of shadows. So what we will do is we will fill in those shadows by bouncing the sunlight on my face with the help of a reflector. और मैं यहाँ पर reflector की silver side use कर रहा हूँ because I was going for the harsher look. नोटिस करना है प्लेस द रिफ्लेक्टर इन ए सच अ वे कि ये मुझे सिर्फ मेरे लेफ्ट साइड को ही लिफ्ट कर रहा है rather than using directly against my face जो कि मुझे बहुत ही फ्लैट लाइट देता. And by doing that, I fill in the shadows while maintaining some shadows on the face to create contrast. और ये सब करने के बाद और थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करने के बाद our image will look like this. This is one of the best look I've created just by using sunlight and a reflector. तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको तीनों में से कौन सा लुक पसंद आया. अब देखो नेचुरल लाइट में शूट करने के ना बहुत अलग अलग तरीके हैं. You can create images like this and this. But ये सब इमेज क्रिएट करने में ना प्रॉब्लम्स भी आते हैं because you are constantly fighting with time. पहले तो भाई वो सनसेट होने का वेट करो कि भाई विंडो से हमारे सनरेज आएंगे, उसका वेट करो और जब आ जाए तो फटाफट से शॉट सेटअप करो ताकि वो सनसेट ना हो जाए और मिस ना हो जाए. We literally have 5 minutes to set up a shot and literally shoot. इसलिए आपने अगर नोटिस किया होगा कि थर्ड लुक के जो BTS फुटेज थे उसमें सनसेट नहीं हो रहा था. सिंपली बीइंग कि मैंने वो BTS फुटेज नेक्स्ट डे शूट किए थे ये सोच के कि भाई मेरे को वो एग्जैक्ट सनसेट फिर से मिलेगा एंड आई विल गेट दैट BTS लुक, बट नहीं मिला. यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नेचुरल लाइट में शूट करने का, क्योंकि अगर उस वक्त जब मैं शूट कर रहा था तब मैं BTS फुटेज भी शूट करने की कोशिश करता देन डेफिनेटली मेरे को ये लुक कभी भी नहीं मिलता. इसीलिए लॉट ऑफ प्रोफेशनल DPs यूज एक्सटर्नल लाइट वाइल यूजिंग द नेचुरल लाइट ताकि उनको एक कंसिस्टेंट लुक मिले, क्योंकि जैसा टाइम बीतता जाता है वैसा लाइट कम होती जाती है एंड यू हैव टू चेंज योर एक्सपोजर, यू हैव टू बम्प अप योर ISO एंड शटर स्पीड कम करनी पड़ती है जब अगर एंड कुछ हो ही ना तो दैट इज द वर्स्ट मोमेंट. बट या यू हैव टू स्ट्रगल व्हाइल शूटिंग इन नेचुरल लाइट. बट क्या करें, एक साइड पे है प्रॉब्लम ऑफ बजट, क्योंकि एक लाइट 15,000 की आती है, फिर उसका सॉफ्ट बॉक्स खरीदो, स्टैंड खरीदो, भेंडी स्टैंड ही 10,000 का आता है लिटरली. स्पेशली फॉर बिगिनर्स जब उनके पास लिटरली कुछ नहीं होता है, जो बेचारे मोबाइल से शूट करते रहते हैं, उनके पास लाइट लेने के कहाँ से पैसे आएंगे. सो दैट इज व्हाई आई मेड दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर इंडोर लाइटिंग. डोंट वरी, आउटडोर के भी वीडियोस आ रहे हैं बिकॉज अगर ये वीडियो में अगर मैं आउटडोर कर दूँ तो ये वीडियो
बहुत बड़ी बन जाती। दैट इज़ वाई डेडिकेटेड वीडियो आएगा आउटडोर पे, क्योंकि मेरे को हर एक यूट्यूबर की जैसा कि भाई सनसेट के वक्त शूट करो या फिर सनराइज के शूट करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये बोल के मेरे को वीडियो को ख़त्म नहीं करना है। आई मेक ए डेडिकेटेड वीडियो जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू शूट इन हार्श लाइट, हाउ टू गेट दैट हार्श सनलाइट लुक एंड हाउ टू a lot of things. तो डोंट वरी, उस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो कि ये वीडियो ना थोड़ा लेट आ गया था क्योंकि आई बीन वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, बट क्या करें, उस प्रोजेक्ट में भी बजट की प्रॉब्लम आ गई तो उसको पोस्टपोन करना पड़ा। नेवरदलेस, आई एम मेकिंग वीडियोस। आई होप इट हेल्प्ड and I hope I didn't disappoint you guys after uploading for so long. I hope you guys enjoy this video and yeah, that's it for today's video. Thank you for watching. अगर आपको अच्छा लगा then, और आपको ये भी पता है कि इन फ्यूचर में आपको क्या देखने को मिल सकता है इस चैनल पे, then you can simply join our community. We have an amazing community of filmmakers and photographers and yeah, thank you for watching. I'll see you in the next one. तब तक पता है आपको क्या करने का है, लाइक ठोको। बाय बाय, पीस। साला पैसे बराबर गा